आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ लोड डिस्चैर्ज पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है एरिया रोड डिस्पैच सेंटर। स्टेज ट्रांसमिशन ऑफ पावर सिस्टम। नॉर्मल तरीका से इसमें एफिशिएंसी और करंट, स्प्रिंग रिजर्व, सिक्योरिटी, मैच सिस्टम, ये सारी चीज़ को देखा जाता है। अलर्ट होता है, इमरजेंसी होता है। अलर्ट के अंदर रिस्टोरेटिव होता है, एक्सट्रीम्स होता है इमरजेंसी के अंदर। बैकआउट या टोटली इंडक्टिव सेंटर। किसी भी स्टेट में डिस्टर्बेंस, न्यू स्टेट कंट्रोल एक्शन, रिज्यूम जर्नी। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ग्रिड। Electricity Act 2003 new provisions. The licensing of generation TC or of CEA not required except for reservoir based hydro. Capacitive generation is freely permitted and promoted. Constitution of CTU, STU and NLDC, RLDC, SLDC and shall not emerge in business for trading. Non-discriminatory open access and transaction and dispatch. Past. Multiple prayer. Same SC area of distribution. %% मीटरिंग होता है। SERCR मैंडेटरी। रिस्टोरेशन ऑफ ट्रैफिक, मल्टी ईयर ट्रैफिक। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिब्यूशनल स्टैंडर्ड प्रोविजन और थीप रिजर्व फोकस स्पेशल कार्ड्स। Generator can take up distribution. Discoms can do generation. National Electricity Policy (NEP). National Electricity Policy aims at achieving the following objective issued by Government of India on February 2005. Access to electricity available for all household in next 5 years. Ability of power. Demand to be fully met by 2012. Energy and packing. Shortage to be overcome and accurate spring reserve to be available. Supply of reliability and quality power. A specific standard in efficient manner and at reasonable rates. Per capita availability. The electricity to be increased to over 1000 units by 2012. Minimum lifetime consumption 1 unit householder per day is the merit good
by year 2012, financial turnaround and commercial reality of electricity sector, protection of consumer interest, need of national grid. For good subtime planning of generation and transmission system in India was being done on a regional concept. Over a period of time, this regional concept planning had yielded good dividends. However, number of overriding factors like uneven disposition energy resources, unbalanced growth of different regions need to optimization of generation capacity. In addition to resume the resources, etc. have the necessary irrigation of regional grid. Formation of national grid. Power grid is central transmission utility. Was established in 1989 with the mandate of establishment of operation of regional and national grid of facility transfer of power within the across the regional with reliability, security and economy on the sound commercial principles. In view of this, power grid has involved perspective transmission plan for short, medium and long term of strengthening the regional grid with unlimited objective of establishment of national grid of phase manner. National grid phase 1. In order to transfer energy across the various regions, many AC interconnection at 220 kV and 400 kV level exist. However, due to numerous factors, our regional grid operate at of nominal parameter most of the time, making it difficult to connect them in synchronous mode. Keeping this in view, in first phase, HVDC back-to-back interconnection with connect in asynchronous mode were planned. However, keeping the eastern and northeastern region connected in synchronous mode, which envisaged the interconnection between the northwest 500 megawatt HVDC back to back in Vindhyachal, west south with 1000 megawatt HVDC back to back in at Chandigarh, and east and south within 500 megawatt HVDC back to back at Gajuwaka have already been established. The first phase of the much needed national grid will be accomplished with the completion of 500 megawatt HVDC back to back at Sasaram, connect eastern and northern region, October 2002. Thus, the cumulative power transfer capacity will be reach to a level of 4,850 megawatt. With the converter effort, power grid energy exchange from eastern region has increased from 500 mega unit in 1993 to about 7,200 mega unit at present. This
has benefited Eastern region at generate companies were not forced to back down their available generation is also the important region which could save the investment that could have been established otherwise. Power grid phase 1. Northern region, western region, southern region, east region, northeast region. ईस्ट रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन को बीरपारा से सलाकती 220 kV AC link in April 1987. 400 kV मालदा in April 2000. $500 megawatt Vindhyachal WR West region, North region, HVDC B2B linked, communicated in November 1989. Northern region. वेस्टर्न रीजन और साउथ रीजन को जोड़ता है, कनेक्ट वेस्टर्न रीजन और साउथ रीजन. 500 मेगावाट भरद्वाती B2B linked, commissioned in April September 1997. Second pole in March 1989. साउथ रीजन और ईस्ट रीजन को जोड़ता है. 500 मेगावाट गाजीवा का commission in September 1999. Second pole March 2005. इस तरह से नेशनल ग्रिड फर्स्ट फेज का इस तरह से सारा कनेक्शन हुआ था. National Grid Sequence and Events. वेस्टर्न रीजन और ईस्ट रीजन को रायपुर से रौकेला 400 किलोवोल्ट AC/DC, कमीशन मार्च 2003. साउथ रीजन और ईस्ट रीजन को इस लिंक से जो जोड़ा गया है, ये लिंक से 2000 मेगावाट टेलीचर कोलार HVDC linked, commissioned September 2002. नॉर्थन रीजन और ईस्ट रीजन को जोड़ा गोरखपुर से मुजफ्फरपुर 400 किलोवोल्ट AC/DC,
कमीशन इन अगस्त 2006 और नया इवेंट हुआ था 500 मेगावाट सासाराम साउथ रीजन और नॉर्थ रीजन HVDC B2B लिंक कमीशन इन जून 2001। National Grid presents North region, East region, Northeast region, West, ये सारा कहाँ से कितना मेगावाट कनेक्शन सप्लाई किए हैं, पावर सप्लाई किए हैं, उसका ये डायग्राम है। HVDC बायपोल, HVDC बैक टू बैक 400, इस ऐसे जो लाइन है ये 400 किलो वोल्ट का है। ये जो लाइन है, हरी वाली जो लाइन है, वो 220 किलो वोल्ट का है। इस तरह का जो भी डिजाइन है वहाँ HVDC बायपोल कनेक्शन हुआ है और इस तरह के लाइन में HVDC बैक टू बैक कनेक्शन हुआ है। फेज 2 में ड्यूरिंग दिस फेज हाई कैपेसिटी सिंक्रोनस HVAC link have also been planned between the region together with synchronous HVDC link associated with certain mega size generation project like Tilcher second 2000 megawatt Tala HEP 1020 megawatt. The major inter-regional linked complicated in this phase area. 2000 megawatt HVDC bipole between Telchar eastern region and Kolar south region. Augmentation of Ganjuaka HVDC link by 500 megawatt between eastern and southern region. 300 megawatt high capacity 400 kV AC link from Tala to Delhi connecting eastern and southern region. 1000 megawatt high capacity 400 kV AC link between the Rourkela and Raipur connecting eastern and western region. 7500 megawatt capacity super highway conserving northern, eastern and eastern region is part of the transmission system associated with Var Kalgaon second, North Kalpura and Hirma generation projects. Power grid has been a special emphasis to its prestigious 2000 megawatt eastern southern interconnected second HVDC bipolar linked Tilchar Korla.
or which dedicated team to striving hard and complete this project ahead of schedules. तिलचर टीपीपी स्टेज 2 में 500 मेगावाट का 4 प्रोजेक्ट हुआ था, बट ऑल्सो फैसिलिटी ट्रांसफर surplus power eastern region to power stave southern region due to advancement of its completion. The 7,500 megawatt super highway link shall provide the flexibility to cope with uncertain associated with a string of new generation projects. With the completion of this phase, this inter-regional power transfer capacity will increase to about 23,000 megawatt. North region, west region or east region parallel operation (26th August 2006). North region से voltage in HVDC B2B back to back 500 मेगावाट वेस्ट रीजन में, और नॉर्थ रीजन से सासाराम HVDC B2B बैक टू बैक 500 मेगावाट 400 केवी मुजफ्फरपुर गोरखपुर DC ये सप्लाई हुआ ईस्ट रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन में। वेस्ट रीजन से 400 केवी राउरकेला रायपुर DC इंटरलिंक है, कनेक्शन एक दूसरे से, और 220 केवी बुध पर कोरबा DC 1000 मेगावाट। साउथ रीजन से वेस्ट रीजन को भद्रावती HVDC B2B 1000 मेगावाट सप्लाई हुआ, और ईस्ट रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन से तिलचर कोलार HVDC बैक टू बैक 1500 मेगावाट साउथ रीजन को सप्लाई मिला। फेज 3 में in the ultimate phase a strong nation grid has been inserted to evaluate the power from major generating resources that include hydro project in northeast region and large site thermal power plant in Bihar, Odisha and Madhya Pradesh. The scheme for ultimate national grid could involve development of high capacity transmission corridor in Chicken Neck area falling between Nepal and Bangladesh, and establishment of a ring of 765 kV line interconnecting east, west and northern region. Commutative inter-regional transmission capacity of the proposed ultimate national grid could be increased to about 1,30,000 megawatt by year 2012.
inter regional link capacity by end of 11th plan 2012। नॉर्थर्न रीजन से वेस्टर्न रीजन कनेक्ट है 7600 मेगावाट, नॉर्थर्न रीजन से 4000 मेगावाट नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्ट है, और ईस्ट रीजन से नॉर्थ रीजन में 8500 मेगावाट कनेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन से ईस्टर्न रीजन में 2250 मेगावाट कनेक्ट है, साउथ ईस्ट रीजन से 8500 मेगावाट कनेक्ट है, साउथर्न रीजन से वेस्टर्न रीजन में 2700 मेगावाट कनेक्ट है, और ईस्ट रीजन से साउथ रीजन में 3600 मेगावाट कनेक्ट है। $37,150 megawatt of inter-regional power by 2012। $765 kV ring main system, the power highway ये सारा कनेक्शन है, कहाँ से कितना सप्लाई लिया गया है, सारा चीज को बताया गया है इसमें। चीप हाइड्रो पावर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड PIT heat thermal power from the east enter the ring and exist two power strip regions, legend existing 9th plan, 10th plan, national grid, 11th plan। ये ब्लैक ये जो ब्लैक डॉट जो है ना, इसको 765 kV लाइन इसको कहा जाता है। कहाँ गया यार, ये जो ब्लैक डॉट लाइन है 765 kV लाइन बोला जाता है इसको। जो ब्लैक लाइन है, केवल जो ब्लैक लाइन है लाइन को 400 kV, किसी भी कलर का जो लाइन है, किसी भी कलर के डॉट है, वो 765 kV लाइन है। किसी भी कलर का ये लाइन है, केवल एक लाइन, जो लाइन इंटरकनेक्ट है, कोई भी लाइन है, लाइन जो है वो 400 kV लाइन्स है। और जो इस तरह का कनेक्शन है ब्लैक, बीच में लाइन, ये HVDC B2B है। और जो इस तरह का कनेक्शन है
जो इस तरह का कनेक्शन है, ये HVDC बाइपोल्स कनेक्शन बोला जाता है इसको। National grid a concerted effort. While developing national grid, various factors like consumption of right-of-way, flexibility to cope with the uncertainties associated with growth of load and setting of new generating station, high cost, high initial traffic etc. pose challenge to the power system planners. The effort of power grid have already come to fruition as already existing interconnection are facilitating transfer of power among the region, resulting to improve grid parameter like voltage, frequency etc. Optimize utilize generation resources. The success of national grid shall largely depend upon the strength of performance of the underlying network to while power up to consume it. Therefore, the exist benefit of national grid to the ultimate consumer is to initial that development, sub transmission and distribution system to communicate with the development of national grid. Regional grid इंस्टॉल कैपेसिटी नॉर्थन रीजन में 38 गीगावाट है, ईस्टर्न रीजन में 20.5 गीगावाट है, साउथर्न रीजन में 39.6 गीगावाट है, ईस्टर्न रीजन में 44 गीगावाट है, नॉर्थर्न रीजन में 2.2 गीगावाट है। टोटल 144.5 गीगावाट टोटल कैपेसिटी है रीजनल ग्रिड में। टोटल 32 लाख 87,263 स्क्वायर केएम एरिया को कवर करता है। ये मोर देन 1 बिलियन पीपुल, 1 बिलियन पीपुल को ये लाइट देता है, मोर देन 1 बिलियन पीपुल को, और एरिया ये कवर करता है 32,87,263 स्क्वायर केएम। ये 2008 की ये टोटल एरिया है। नीजर ग्रीन के अंदर नॉर्थन रीजन में 10,10,000 स्क्वायर केएम में टोटल सप्लाई है। पॉपुलेशन 330 मिलियंस है। पीक डिमांड, टोटल डिमांड है 28 गीगावाट। 560 मेगा यूनिट पर डे का यूजेज है। नॉर्थन ईस्टर्न रीजन, नॉर्थन रीजन में 2,55,090 स्क्वायर केएम में फैला हुआ है। पॉपुलेशन 40 मिलियन है। पिक डिमांड
1.3 गीगावाट है। 21 मेगा यूनिट पर डे इसका यूज है। ईस्टर्न रीजन में 43 लाख 3,680 स्क्वायर का फैला हुआ है। 240 बिलियन पॉपुलेशन है। डिमांड है 10 गीगावाट और इसका कंजम्पशन है 200 मेगा यूनिट पर डे। इस प्रकार से ये वेस्टर्न रीजन का है और ये साउथ रीजन का है। ये यूजेज को बताया गया है। 2027 में इंस्टॉल कैपेसिटी अनुमानित किया जा रहा है 685 गीगावाट होगा और डिमांड होगा 520 गीगावाट और ग्रोथ रेट होगा 8 से 9% पर एनम। हाइड्रो रिसोर्सेज इस एरिया से हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं। यहाँ कोल बेल्ट है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, नेशनल इंटरकनेक्शन ओवर सोलर लिंक 132 केवी से 33 केवी में चेंज होता है, डाउन होता है और उससे 11 केवी में डाउन होके रियल लिंक विथ नेपाल, नेट इंपोर्ट बाय नेपाल। इसका ये डायग्राम है, कैसे कहाँ क्या सप्लाई कितना देते हैं नेपाल को। नेपाल से कनेक्शन है। दूसरा कनेक्शन है भूटान से। भूटान में 1020 मेगावाट ताला को देते हैं। चौका को 336 मेगावाट। क्रूचू को 60 मेगावाट इन इम्पोर्टेड बाय इंडिया। इंडिया से इतना इंपोर्ट करते हैं हम। इंडिया भूटान सिग्नस लिंक्ड 400 केवी ताला बिनागुड़ी डीसी, 400 केवी ताला मल वेस बिलगुड़ी, 220 किलोवाट चौका विरमपुरा डीसी, 220 चौका मल वेस विरमपुरा, 132 केवी चुरकू गिल फुग बेंगा जियोन। इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया सोर्स वाइज ये 2008 के अनुसार है। थर्मल जो है 144.6 गीगावाट है। रिन्यूएबल से 12.2 गीगाहर्ट, हाइड्रो से 36 गीगावाट और न्यूक्लियर से 4.1 गीगावाट पावर जनरेट होता है। कहाँ कितना सप्लाई को यूज करते हैं हम? इंडस्ट्री में 45% यूज करते हैं, 3% अदर में यूज करते हैं, 7% कॉमर्शियल यूज करते हैं, 20% एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, 2% रेलवे में यूज करते हैं और 21% घरेलू यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज है।
Energy resource map, hydro potential in northern east upper part of northern region, coal reserve mainly in eastern region. Distribution of energy resource and consumption center are extremely unbalanced. Necessity power transfer over long distance. जो ब्लैक एरिया यहाँ कोल से बिजली बनाया जाता है, जो ये इस एरिया में हाइड्रो पावर से बिजली बनाया जाता है। इस वाले एरिया में लिगेट से बिजली बनाया जाता है और ये कोस्टल होता है, इसमें न्यूक्लियर लाल टाइप में न्यूक्लियर से बिजली बनाते हैं। लोड सेंटर है ये इस टाइप का जो है, वहाँ लोड का सेंटर है। EHV इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रल लेवल पर ट्रांसमिशन वोल्टेज मैक्सिमम 500 kV को HV ट्रांसमिट करते हैं, 700 kV चार्ज है, 400 kV 765 kV चार्ज है। सेंट्रल लेवल पे टोटल हो गया 2,73,682। महाराष्ट्र स्टेट ओवरव्यू, स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क, इंस्टॉल कैपेसिटी महाराष्ट्र स्टेट। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, central sector companies generating UTG, NTPC, NHPC, NIPCO, NPCIL, transmission utility, CTU, power grid, RLDC, finance, PFC, rural rectification, REC। इसको ऑथराइज करता है CEA, REBS, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, CPR है, NPT है, PST है। मेगा है PPS में एफिलिएट ट्रिब्यूनल, इंडिपेंडेंट CERC, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MOP स्टेट गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट SERC, स्टेट IPPS से ये इंटरलिंक है। ट्रेडिंग कंपनी है PTC इंडिया, NVVNI, स्टेट सेक्टर में काम करता है SLDC, जनरेशन ट्रांसमिशन, STU डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइवेट डिस्कॉम। सेंट्रल सेक्टर कैपेसिटी एंड मेडेस शेयर, MSEDCL share in central sector capacity। रीजनल ग्रिड मैनेजमेंट, ग्रिड ऑपरेशन फिलोसफी, टेक्नोलॉजी ऑपरेशन कंट्रोल, लॉस पावर पूल, स्टेट पावर सिस्टम, ट्रेड नेशन फ्लेक्सिबल कंट्रोल एरिया, वेरी लाइट कंट्रोल, एक्चुअल इंटरेक्टिव बाय utility not maintained, deviation from pre-committed scheme previously priced, unit of command, national load dispatch center, linear load dispatch,
body within the region, state load dispatch center. What is the state? पैसा नीचे है मामा के पास महाराष्ट्र से टिपिकल लोड कर्व टोटल एंड मैक्सिमम डिमांड इतना ये सब इसका लोड सिस्टम है ग्रिड ऑपरेशन बाय लोड डिस्पैच सेंटर नेशनल रीजन स्टेट नेशनल हेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ लोड डिस्पैच सेंटर NLDC दिल्ली बैकअप सेंटर कलकत्ता सेंट्रल ग्रिड RLDC NRLDC ERLDC WRLDC मुंबई NERLDC SRLDC गुजरात गुरोती मध्य प्रदेश जबलपुर महाराष्ट्र SLDC का हुआ चंडी छत्तीसगढ़ भिलाई गोवा LDC अजमेरी मुंबई LDC Judicial Load Dispatch Center NLDC approx body of ensure integrated approval national power system RLDC approval body ensure integrated operation power system in the concerned region SLDC approx bodies ensure integrated operation power system in the state. Function of the SLDC Sector 32 Grid operation task of grid operation state level grid operation में dimension security top most priority economy commercial regularity generation plus purchase plus load shedding demand होता है MSEB on station CS station bilateral TPCL other IPP plain urban rural EHV. There are commercial value associated with real-time operation of grid. Function of load dispatch. Objective economic commerce security. Pre-dispatch function demand essential generator ensuring merit order dispatch plan load control plan. Load generation कुछ नीचे एक पॉइंट कट रहा है आउटेज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग लोड कंट्रोल इम्प्लीकेशन ऑप्टिमम हाइड्रो यूटिलाइजेशन पोस्ट डिस्पैच फंक्शन में एनर्जी मैनेजमेंट स्टडीज पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट्स बैकग्राउंड फंक्शंस reliability of state load dispatch center as reserved under IECR demand estimate for the operational purpose student metering order dispatch load balance maintenance frequency 49.2 से 51.3 रेंज का होता है मेंटेन करना होता है monetizing control महाराष्ट्र की Indian Electricity Grid Code IEGC description the philosophy and responsibility of planning and operation of Indian power grid specified by the Commission in according with section 1H Sector 79 of the Act in force in February 2000 last revision in April 2006 contains technical rules
guideline and operation standard for planning, development, maintenance, operation of power system to be followed by the various agency participant in the system. Role of statutory bodies: CEA, CTU, RPC, SLDC, RLDC. System security frequency voltage limit as per CERC regulation 2009. Quality of power: frequency pulse of power system 50 MHz ideal frequency, Indian power system. Permissible 49.20 to 50.3 as per CERC regulation 2009. Generation protection LF setting 47.5. Stating 50 system standing massive take 47 RPUF. Iceland scheme for TC systems. System voltage limit rated 765 किलो वोल्ट में मैक्सिमम 800 किलो वोल्ट इनपुट कर सकते हो और मिनिमम 700 किलो वोल्ट। 400 जहाँ रेटेड हो रहा है किलो वोल्ट का वहाँ 420 किलो वोल्ट मैक्सिमम दे सकते हैं, 360 किलो वोल्ट मिनिमम, 220 किलो वोल्ट जहाँ होता है 245 किलो वोल्ट मैक्सिमम और मिनिमम 200 किलो वोल्ट। 132 किलो वोल्ट जहाँ होता है मैक्सिमम 145, मिनिमम 120। पावर नंबर सेक्रेटरी ग्रिड ऑफ इंडिया, पावर नंबर मेगावाट अपन हर्ट्ज, टोटल लोड अपन 50 किलोवाट, 2000 मेगावाट पर हर्ट्ज। लोड शेडिंग, लोड generation force outage will break down step period increase demand. Load control measures, load shedding. Rural area, urban area, other urban, preferred time block in rational manner per principal laid down. Group A. Emergency load shedding 400-800 megawatt. Arrest fall frequency below 49.2 Hz. Automatic under frequency load relief. Controllable frequency automatically for the system security 41 Hz and 50 megawatt. 48.60 instant 550 मेगावाट फ्रीक्वेंसी, 48.2 इंस्टेंट 730 मेगावाट टोटल 2009 रीजनल ग्रुप कलर। Derivative of commission, honorable commission may be inspect the state site and take action against rent official involved to power under S142, S146 EA 2003 provide the enforcing fine and commission direction. Role of MSLDC, Maharashtra State Load Dispatch Center may take decision to withdraw load shedding according to
availability line considering due to overloading, outage, low voltage pockets in the interest of system availability and security. State Grid Code Regulation 2006 22.9 user the transmission license shall be ensured that the under frequency and df upon dt really based load shedding scheme materialized in regulation 22.18 are always function provided that the relay may be temporarily kept out the service in extreme constituency with frequency state load dispatch center. Desired quantum of load throughout RTRF operation. Remedial measure single phase supply rural area target 10,000 village separation of feeder division capacity of road SNDA measured for drive reactive power measurement. मेगावाट MVA दोनों मिलता है तो MVAR का निर्माण करता है. सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर सिंक्रोनस जनरेटर सिंक्रोनस कंडेंसर शंट कैपेसिटर्स स्टेट हाइड्रो बेस्ड डिवाइस ट्रांसमिशन लाइन्स कैपेबिलिटी कर्व Q MVAR reactive power lead motoring leg generating P megawatt active power. Transmission line SIL surge impedance loading the SIL in the loading level where the reactive VARS generated in the line capacity equal to VAR required by the line conductance. Quick fact 100 kilowatt 100 km of the 400 kV lines doing most cause 55 MVAR of charging current. Our voltage problem generator self excitation insulation breakdown flashover consumer equipment damage exclusive heating overheating transformer. Under voltage causes heavy line loading disturbance high consumer demand inductive motor heating dim light more light less heat more heat voltage collapse. Correct low voltage remove shunt reactor insert shunt capacitor energize open line rise LTC set point use generator reactive overload capacity cultural interruption load shield farm load. To correct high voltage remove shunt capacitor insert shunt reactors load voltage set point close open line remove from the service alternator. Buck with generators remove transmission line from service. Point to remember VAR control is the key of voltage control. Use voltage control equipment early. Avoid voltage collapse high voltage by a smart operating. Load angle it implication in power system operation. पावर जो होता है VT क्रॉस VS अपॉन एक्स साइन थीटा.
400 kb network overview. Tap changing, rearranging MVR flow to be down consuming voltage on both sides, co-oriented across the system. Tap changing schedules, generation scheduling, rescheduling, day ahead scheduling, decentralized scheduling, सबसे नीचे कुछ कट रहा है. रिजर्वेशन ड्यूरिंग करंट डे. merit order dispatch generation scheduling done MSM system only. Demand estimate, power plant energy rate of merit order dispatch mode source. Commercial activities, interstate ability based tariff. It is effective commercial mechanism inserted to enforce grid discipline under the base framework of Indian Electricity Grid Code. Pre-AVT problem in grid operation. Center transmitted utility CTU resolution, maximization of generation load, ultimate equal to defect in generation load, peak, off peak, back down to generation match the system load reactor, giving the merit of generation of zero. ERC regulation 2009. The objective of these regulation to be maintain grid disciplines as envisaged under the grid code through the commercial mechanism and schedule interchange charged by the controlling the user of the grid in scheduling, dispatch and control of the electricity. Scope. These regulations shall be applicable to generation station and the benefit and seller by involved in the transmission facility through the open across the medium term, across the long term, across inter transmission electricity. Unscheduled interchange charge. UI rate. Present UI tariff from April 2009. Experience with unscheduled interchange. केस 2 का कुछ कट रहा है नीचे.
केस 2 में हाई फ्रीक्वेंसी अंडर ड्रोल UI rate low and constitution is losing action required withdraw load scheduling if any schedules on generator to possible extent try to bilateral sale of power reduce CS schedule to keep UI minimum. Where do SEM come into picture? Only measuring the deviation from schedule UI to measure 50-minute block wise energy and frequency issue concern specification load creation main check standard philosophy. What we achieve through ABT result in western region. Intra-state ABT objective and principle. Effective utilization state resources, improvement in grid discipline, enhancement of metering and data collection, trading of electricity within a state, secure, reliable and quality electricity supply at the lowest possible price to the consumer. Principle of commercial mechanism. Merit order of operation. Efficiency balancing mechanism. Hybrid approach. Intra-state transmission. Schematic representation. लॉस जो होता है इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में MSE TCL प्लस TPCL TR प्लस REL TR 4.85% MERC लॉस होता है सम इनपुट माइनस सम आउटपुट. ओपन एक्सेस. Improve performance of generating plant, diversity being gainfully utilized. Indian electricity market in a verse structure. Share resources, ISGS, own resources, control sector, SEMS, ABT, settlement in stage 2002-2003. Constitution of Maharashtra State Power Committee, MSPC, institutional mechanism to government of state level ABT framework, develop and provide platform of better mechanism, provide framework for efficient recommendation and settlement, recording commercial arrangement and energy exchange, almost parties, bring transparency of operation and improve system and pursue the market operation. MSPC member, Chief Executive of MSE DCL, Chief Executive of TPCD, Chief Executive of
RELD, Chief Executive of Base Breed, Head Executive of MSDLC. Operation Framework, State Grid Code Parts, MRC State Grid Regulation to be effective from 1st August 2006. General Planning Code, Consumption Condition Operation Code, Scheme Dispatch Code, Meriting Code, Miscellaneous, Data Acquisition and Communication System, NLDC, RLDC, SLDC, Sub-LDC, ITU, national level, regional level, state headquarter level, group district level, planning substation level. Dedicated communication system, data acquire speech, have nodes, 23 में 51 नोड्स 1160 नंबर्स टोटल है इस लेवल। हर लेवल पर अलग अलग नंबर है। रीजनल लेवल पे 5 है, स्टेट हेडक्वार्टर लेवल पे 23 है, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 51 है और प्लांट एडमिनिस्ट्रेशन में 1160 है। सुपर रिजर्विटी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाजिशन, supervisory control and data acquisition, highlight and SCADA system. MMI 220 PLCC 50 to 500 किलोवाट। National Grid Power Bill. Conclusion: it is the implies that SLDC institution, which tracks body for the grid generation in the state in coordination with RLDC, has an important increasing role in operation state grid in the economics, reliable and source manner, and maintain coordination with RLDC, all users of the grid within the state. The ability-based traffic structure and purpose intra-state balancing mechanism for the state included have the idea for the transmission and working requirement SLDC. The necessity of function of state load dispatch center along with security, economics and commercial aspect for the put forward. The operation code under IGC SGCR discussed. थैंक यू। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।